Okay, hello everyone, welcome to Answer YouTube channel. So let's start with the next topic, and this is the third class of class 12 physics. In continuation, in previous two classes we have studied about Coulomb's law. We have seen how to calculate the forces between two charges in numerical as well as in theoretical form. Theoretical form we have learned the scalar form and vector form of Coulomb's law. Okay, so let me write down the formula that we have used till now. So one formula that we have used is q is equal to ne, where q is charge and it must be in coulomb, n is number, e is electronic charge constant whose value is 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, so this formula can be used to calculate the number of electrons for a given amount of charge. Okay, so how many electrons are there in 1 coulomb, 2 coulomb or 3 coulomb or any number of charge we can calculate using this formula. The next formula that we have used is Coulomb's formula itself, that is 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 by r square. Okay, and this formula is applicable for the two point charges when they are kept in vacuum or space. Okay, and they are separated by a distance r. So these two charges will repel each other if their product is greater than 0. That means they are either positive or negative, and this force value is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, and f acts along the line joining the two charges. Okay, here we have told you that 1 by 4 pi epsilon naught, its value is 9 10 to the power 9 newton meter square upon कूलम स्क्वायर. और हम लोगों ने ये भी देखा था कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं. ओके, एंड इट्स वैल्यू इज 8.85 इंटू 10 to the power minus 12. इसका यूनिट जस्ट उल्टा होगा 1/4 का, दैट इज कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. अगर ये दो चार्जेस हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं तो यहाँ पे के या रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डिफाइन किए थे. के का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड साइलेंट आर इज रिलेटिव परमिटिविटी. सो relative permittivity. So K or epsilon R is ratio of permittivity in a given medium to permittivity in the space or vacuum, that is epsilon upon epsilon naught. So we can write epsilon as epsilon R multiplied by epsilon naught, or epsilon as K times of epsilon naught. Okay, so for different medium K changes, but for vacuum or space K is equal to 1. These are the things that we have studied till now. इसके बाद के टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे. सो अगर ऐसा हो जाए जहाँ पे कि मेरे पास दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो उस केस में हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं. लेट अस से दैट आई हैव q2 चार्ज हियर, आई हैव q3 चार्ज हियर, आई हैव q1 चार्ज हियर, आई हैव q4 चार्ज हियर, and so on. There are n number of charges. So let this nth charge as qn, and these all charges are such that their magnitude is positive, or they themselves are positive in nature, they are positive charge. So if I have to find uh, the total force acting on q1 due to all other charges, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल. ओके, हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को देखने जा रहे हैं क्या होता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, और वी विल derive this superposition principle formula in the vector form. Okay, सो इसलिए हम लोगों ने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको पूरा सिस्टम लिया है. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हर एक चार्ज का अपना एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं. ओके, सो जैसे q1 के लिए हो गया r1 वेक्टर, q2 के लिए हो गया r2 वेक्टर, q3 के लिए हो जाएगा r3 वेक्टर, qn के लिए rn, एंड ये हो जाएगा किसके लिए, q4 के लिए. ओके,
तो यहाँ पे क्या था, Q2. ओके, so let me draw the line again. So this one was R1, R2. Okay, okay, let me make all the line straight, so this way this diagram will look much better. मैंने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस वाली लाइन खींच ली. ओके, फिर ये वाई एक्सिस वाली लाइन खींच ली. ठीक है, सो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया. इन सारी लाइन को ओरिजिन से कनेक्ट करके पोजीशन वेक्टर डिटरमाइन कर लेते हैं. तो ये हमारा हो गया क्या, R2 वेक्टर, ये हमारा हो गया R3 वेक्टर, ये R1 वेक्टर हो गया था, फिर ये R4 वेक्टर, एंड ये लास्ट में Rn वेक्टर. हमारे पास अभी मेन पॉइंट है कि Q1 पे बाकी फोर्सेस, बाकी चार्जेस कितने फोर्स लगाएंगे. तो Q1 पे सबसे पहले अगर हम 2 की वजह से फोर्स देखें तो वो कुछ इस तरीके से लगेगा. ओके, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं. So first join 2 and 1, and from here you draw a straight line. So this line will be F1 2 vector. Force on charge Q1 due to charge Q2. उसी तरीके से इस पे Q1 पे Q3 फोर्स लगाएगा along this line, and it will be F1 3 vector. Force on charge Q1 due to charge Q3. फिर चार्ज फोर्स कैसे फोर्स लगाएगा, तो उसके लिए 1 और 4 को ज्वाइन किया मैंने, और ये हो जाएगा F1 4 वेक्टर. एंड इन द लास्ट Q1 को रिपेल करेगा कुछ ऐसे, इसको मैंने बोल दिया F1 n वेक्टर. सो देयर आर 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन Q1. जब हम Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स निकालना है तो वी विल ज्यूम कि Q3 Q4 Qn का कोई इफेक्ट नहीं आएगा F12 पे. ओके, इन द सिमिलर मैनर हम बाकी फोर्सेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इसी पूरे कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोग जो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, दैट प्रिंसिपल इज नोन एज superposition principle. So superposition principle are used when the number of charges is more than 2. Okay, now the total force acting on Q1 will be the vector sum of these F12, F13, F14 and F1n. Okay, so यहाँ पे जो हम लोग वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे उसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ आएगा. तो थोड़ा सा हम से रिवाइज कर देते हैं. फर्स्ट लेट मी राइट व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो इफ देयर आर मल्टीपल चार्जेस, और ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ पे डिराइव कर रहे हैं अभी, वैक्यूम में. तो इसमें लिखेंगे देयर आर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट इन स्पेस और वैक्यूम, and then the net force acting on any one of them will be the vector sum of all the forces on that charge due to the remaining charges. Okay, and one point that you have to note here, नोट में यहाँ पे पॉइंट क्या लिखना है, द फोर्स बिटवीन any two charges is unaffected by the presence of other two charges. Okay,
The force between any two charges is unaffected by the presence of other two charges. So how will you calculate this F1 value? Okay, so before that I told you to explain the parallelogram law of vector addition. So parallelogram law of vector addition says that अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं जिसको हम पैरेललोग्राम के साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. So let me call these two vector as A vector and B vector, and they are acting at an angle of theta. So यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको दिखाने के लिए हम इस दो वेक्टर का पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है. फिर इसके बाद ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम में, से वाला, ठीक है. दिस लॉन्गेस्ट डायगोनल itself is the resultant vector. Now in class 11th we have studied this r vector magnitude is given by under root a square plus b square plus 2ab cos theta, okay. And if theta is 0 degree, theta is 90 degree, and theta is 180 degree, there is a special case for the resultant. If theta is 0 degree, then r will be equal to a plus b simply. These two vectors are in the same direction, then you can directly add them to get the resultant. If two vectors are acting at 90 degree to each other, then cos 90 will become 0. Resultant will be under root a square plus b square. And two vectors are anti-parallel to each other like this. This angle will be 180 degree. In that case, r will be a minus b. So using these two concepts, we can easily find the force on a given charge due to multiple charges present around it by the concept of superposition principle, okay. So come back to superposition principle again and try to derive the complete formula, okay. So as we are looking at q1, so you can see here there are four forces, f12, f13, f14 plus f1n. So we will have to write this position vector also of f12. So we use different color. This f12 will determine the position vector of r12 cap like this. f13 will give us r13 like this, और f14 के अकॉर्डिंग r14 ऐसा हो जाएगा, और f1n के अकॉर्डिंग r1n वेक्टर r11 कैप ऐसा हो जाएगा, ओके. तो इसको यूज़ करके हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. So let me write that formula for you. So f1 vector is equal to f12 vector plus f13 vector plus f14 vector plus dot dot f1 n vector. Now if you remember the vector form of Coulomb's law, so we used to write 1 by 4 pi epsilon naught first, product of the two charges 1 2 r12 vector square multiplied by r12 cap. So इसी तरीके से ले सकते हैं 1 by 4 pi epsilon naught q1 q3 by r13 vector square into r13 cap plus 1 by 4 pi epsilon naught q1 q4 by r14 vector square into r14 cap
plus dot dot 1 by 4 pi epsilon naught q1 qn divided by r1 n vector square into r1 n cap. Okay, तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले में देखें तो मुझे 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, उसके साथ साथ q1 भी कॉमन मिल रहा है. सो लेट मी टेक दोज टू थिंग्स कॉमन हियर. q1 डिवाइड बाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पहला टर्म जो बचेगा उसको कहेंगे हम q2 बाई r12 स्क्वायर इंटू r12 कैप प्लस q3 divided by r14 to the square dot dot r13 3 vector square dot dot plus qn divided by r1n vector square. यहाँ पे r13 कैप भी आएगा, यहाँ पे r1n कैप आएगा. ओके, अब इसको हम लोग समीशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? f1 वेक्टर इज इक्वल टू q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन qi divided by r1i vector square into r1i cap, where I varies from 2 to n. This summation formula is applicable directly only for the force on q1, but for other you have to remove one value, that is I cannot start from 1 to directly up to n, you have to remove one value. Okay, if you are finding 2 for f2, you have to write like I should not be equal to 2. For 3 I should not be equal to 3. Other values you can consider. Now you can change this formula again. F1 vector is equal to q1 by 4 pi epsilon naught summation I varies from 2 to n qi. We can write r1i as see, if I have r1 like this. Okay, so we are calculating force. Let's suppose here it is 2, so it will be r2 vector, and q1 was here, so f12 will be like this. So I said r12 cap will be like this. So if I have to go from origin to 1, so I can go directly on r1 path, and I have to go by r2 path, so it will become r2 plus r12 vector. So from here r12 becomes r1 minus r2. So using this formula, if I have to change r1i, so I can write r1 vector minus ry vector square in the similar fashion r1 minus ri vector divided by r1 minus ri vector. So overall the formula for f1 can be written as q1 divided by 4 pi epsilon naught समेशन की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से लेके n तक, then qi multiplied by r1 vector minus ri vector divided by r1 vector minus ri vector cube. Okay, so this is the general formula for applying superposition principle to calculate the net force acting on charge q1 due to remaining charges like q2, q3, q4 and so on. Okay, so let me give a numerical based on this topic so that you can understand this topic better. I'm going to write the statement of the question. Question says that an infinite number of charges
an infinite number of charges each equal to 4 microcoulomb are placed along x-axis at x is equal to 1 meter, x is equal to 2 meter, x is equal to 4 meter, comma x is equal to 8 meter, and so on. Then it is asking find the total force. इसमें हमें क्या निकालना है? Find the total force on a charge and the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. ओके, हमने डायग्राम इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि डायग्राम में ही आधा हिंट है, तो इसलिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस मतलब वी कैन नॉट काउंट इट, नंबर ऑफ चार्जेस विल गो टू इन्फिनिटी, बट द गुड थिंग हियर इज दैट एवरी चार्ज जो है वो 4 माइक्रोकूलम का ही है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये रखा हुआ है, ठीक है, वाई है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ मेरा पहला चार्ज जो है 1 मीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। सो 1 मीटर पे पहला चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का। दूसरा चार्ज रखा है 2 मीटर पे, अगेन 4 माइक्रोकूलम का। तीसरा चार्ज रखा हुआ है 4 मीटर पे, 4 माइक्रोकूलम का, जस्ट डबल द डिस्टेंस। सो 4 का डबल कितना होगा? 8। सो यहाँ पर रखा हुआ। इसके बाद जो अगला चार्ज रखा होगा वो आई गेस 16 मीटर पर रखा होगा, तो उसको हम यहाँ नहीं दिखा सकते, तो अप टू इन्फिनिटी ये चार्ज ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि ओरिजिन पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 1 कूलम। इस पे जो नेट फोर्स होगा इन बाकी चार्जेस की वजह से हमें वो निकालना है। तो जितने भी फोर्सेस यहाँ पे लगेंगे सब जो है निगेटिव एक्स में लगेंगे 4 माइक्रोकूलम की वजह से, बिकॉज सब के सब पॉजिटिव है, तो सब इस पर इसी तरीके से फोर्स लगाएंगे। तो इन सारे फोर्सेस को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं बिकॉज सब पैरेलल है। तो पैरेलल केस में भी हम लोगों ने देखा था कि यू कैन ऐड ऑल द फोर्सेस, बट वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्सेस फर्स्ट, ओके। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, तो जिसके ऊपर कंसिडर कर रहे हैं उसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं। सो Q1 हमारा यहाँ पे ये हो गया 1 माइक्रोकूलम, 4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता है इसमें, बाई जो डिस्टेंस वेरी कर रहा था वो I2 से लेके इन्फिनिटी तक होगा यहाँ पे, QI डिवाइडेड बाई R1 I स्क्वायर। हो चुकी हमें वेक्टर फॉर्म में नहीं निकालना है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम इसमें कैप मल्टीप्लाई नहीं करें। तो अभी किक करके हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान ये रखना है कि R1 का 2 के साथ डिस्टेंस कितना है, तो अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4th होगा, ये 5th होगा। तो R1 2 डिस्टेंस मुझे क्लियरली दिख रहा है 1 मीटर है, R1 3 दिख रहा है वो क्लियरली कितना है 2 मीटर है, R1 4 दिख रहा है 4 मीटर है, R1 5 दिख रहा है वो है 8 मीटर। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 1 कूलम का चार्ज ये है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹9। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को फिजिक्स के थ्रू मैथमेटिक्स के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से जोड़ा गया है। तो हम देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे आ रहा है। सो 9 एंड इसके बाद ये जो क्यू आई है ये हर जगह सेम होगा, दैट इज़ 4 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोकूलम। तो इसे भी हम बाहर निकाल सकते हैं समेशन के, तो 4 इंटू 10⁻⁶। अब समेशन में 1/R1 2 का स्क्वायर मतलब 1/1 का स्क्वायर, फिर 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/4 का स्क्वायर, ऐसे वैल्यू आती जाएगी।
सो एवरी नेक्स्ट टर्म, ये जो सीरीज़ हमारे पास बन रही है, जीपी की सीरीज़ बन रही है, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है बेसिकली, 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64. So every next term is can be obtained from the previous term by multiplying it by 1/4. So here the first term is 1 और जो कॉमन रेशियो है वो कितना है 1/4. तो इनफाइनाइट जीपी के लिए जो सम की वैल्यू होती है वो होती है ए अपॉन 1 - r। तो जनरल टर्म्स के लिए था वो था ए 1 - r to the power n divided by 1 - r to the power n. So if you put n as infinity here, so I think you will get the value. Okay, so yes, so here a is 1, r is 1/4. So this infinity term will be this sum will be a is 1, 1 minus 1/4, which is 1/4 is 3/4, so whole sum will come as 4/3. So 9 4 ja 36 and 10 to the power 9 and minus 6 will become 36. 9 minus 6 is 3 multiplied by 4/3, so overall it will go 12 times. So 12 4 ja 48. In scientific notation it can be written as 4.8 into 10 to the power 4 Newton. Okay, so this is your answer. So in this way we have calculated a numerical based on superposition principle, and we have seen in today's class what is superposition principle and how we have used it to calculate the forces between n charges. When the number of charges is more than 2, we apply superposition principle. Okay, so that's all for today's video. In next class we will start with electric field. Okay, so thank you for watching this video and have a nice day.